Hello student. Today I will explain you objective type questions means मैं आपको पूरे 4 टॉपिक के ऊपर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो बताती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में वो यूज़फुल हो हेल्पफुल ओके। और तो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है वो सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मतलब जो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है उसके। फर्स्ट गार्नर वर्सेस फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स। जो रूल है देखो, गार्नर वर्सेस म्यूरी इज एप्लीकेबल इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ये फॉल्स है या ट्रू है? तो फॉल्स है। ये हम मैक्सिमम लॉस के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ realization account would be the same under both the circumstances. True. Third one, solvent partners should bring cash equivalent to the share of realization loss. False. Fourth one, the rule in गार्नर वर्सेस म्यूरी जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, कैन बी अप्लाइड even if there is only one solvent partner. False. Last one, under maximum possible loss method at each realization the unrealized assets are considered worthless. True. Okay, then fill in the blanks. Fill in the blanks में है फर्स्ट वही जो रूल है वो, the rule may be applied only if there are at least dash solvent partner in the firm. 2 partners चाहिए. Second, when all the partners are insolvent, it will result in insolvency of dash a firm. Third one, unless the available cash is sufficient to pay creditors in full, we have to prepare dash realization account, provisional account. Fourth one, a minor is admitted to the dash of the firm only benefits. Fifth one, all assets and outside liabilities are to be transferred at their book value to the realization account when sale of the firm to a company take place. Okay. Sixth one, cash and bank represent assets, so they are dash in the purchase consideration included. 7.1, assets and liabilities not taken over by the purchasing company may be dealt through dash account, realization account. 8 number का fill in the blanks है. On piecemeal distribution 2 methods are adopted, dash and dash. तो यहाँ पे जो 2 मेथड है वो कौन सी है? सरप्लस मेथड एंड मैक्सिमम surplus method and maximum loss method. Okay. 9 number, interview payments should not result in dash overpayment.
10 number, in the end, after all realization have been made, final deficit balance must be in dash ratio, profit sharing ratio. 11 number, on realization of assets, first priority for distribution of realized cash will be for payments of dash realization expenses. Last one, under maximum possible loss method, it is presumed that the unrealized assets are dash worthless. ओके, ये हो गए. आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और राइट डाउन करके ले लो. ये हो गए हमारे पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, अब नेक्स्ट मैं जो बता रही हूँ वो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वर्जेंस accounting concepts, conventions and principles, and an overview of emerging trends in accounting, उसके ऊपर है. तो उसका देखते हैं हम पहले. ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स जो है वो, फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज जनरल law or rule followed in the preparation of financial statement. It is true. Second one, usefulness, objectivity and feasibility are the three basis norms generally found in accounting principles. True. Third one, it is on the basis of going concern concept that the assets are always valued at market value. False. According to money measurement concept, the efficiency of the top management of the business must be clearly recorded in the books of accounts. False. Last one, according to periodic matching of cost and revenue concept, a businessman is not only to measure revenue in a particular accounting period, but also has to calculate expenses which can be assigned in earning such revenues. True. Fill in the blanks. First one, expenses are matched with dash generated during a period. आंसर है रेवेन्यू. सेकेंड वन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश is an example of revenue. Salary paid in an example of expenses. Income is the excess of dash over dash. Income is excess of revenue over expenses. Fifth one, फिफ्थ एंड सिक्स बहुत ब्लर आ गई है. मैं बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो और बाद में राइट डाउन करो. ओके. फिफ्थ वन है, डैश कंसेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड. आंसर है मैचिंग. फिर से बताती हूँ, डैश कंसेप्ट means answer a matching concept state that the revenue and the expenses incurred to the earn the revenue must belong to the same accounting period. Okay. Last one है, dash concept states how the expenses should be compared with revenues for ascertaining exact profit or loss for the particular period. मैचिंग. आंसर उसका है मैचिंग. ओके.
इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक था उसके कोई ऑब्जेक्टिव देखते हैं। थर्ड टॉपिक क्या था हमारा? सिंगल एंट्री सिस्टम, आई थिंक, है ना। और लास्ट क्या था? थर्ड टॉपिक था हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम एंड लास्ट था गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग। ओके, तो हम देखते हैं जो थर्ड टॉपिक है सिंगल एंट्री, उसके ऊपर हमारे पास क्या क्या है। एक तो ट्रू और फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, देन इंडिकेट द करेक्ट आंसर है एंड आंसर वन सेंटेंस भी है। ओके, और उसके बाद इतना ही है। चलो तो फर्स्ट देखते हैं ट्रू और फॉल्स। द नेम सिंगल एंट्री सिस्टम हैज़ कम into vogue because for every transaction only aspect is recorded in the books of account. False. Second, under single entry system it is not possible to prepare a trial balance unless the missing figure are ascertained. True. Limited companies are free to choose either single entry or double entry system of accounting. False. Fourth one, under single entry system the usual accounts maintained are the personal accounts of suppliers and customers and the cash book. True. Fifth one, under the net worth method, profit is ascertained by deducting the value of assets. False. Under the net worth method, profit is ascertained by calculating the increase in net worth after adjusting for drawing and additions to capital. True. Next, fill in the blanks. First one, under the net worth method. Under the net worth method, profit is ascertained by the addition of dash to the increase in capital over the accounting period. Drawings. Second one, capital at the beginning and capital at close are usually ascertained as the balancing figure of dash prepared on the relevant accounting dates. Answer is statement of affairs. Third one, under single entry system, information relating to expenses must be ascertained from the analysis of cash book. Fourth one, acceptance received during the period must be debited bills receivable account and credited to dash account. Answer is total debtors account. Fifth one, acceptance issued during the period must be debited to dash account and credited to bills payable account. Total creditors account. Okay. Then indicate the correct answer. Indicate the correct answer. Under the net worth method, the basis for ascertain the profit is. इंडिकेट द करेक्ट आंसर मीन्स वन सेंटेंस में आप आंसर दे सकते हो, मतलब जो भी ऑप्शन है वो लिख सकते हो। अंडर द नेट वर्थ मेथड, अंडर द वर्थ
Under the net worth method, the basis for ascertaining the profit is answer A option, the difference between the capital on two dates. Second one, under the net worth method, any additions to capital during the accounting period must be option B subtracted from profit. Third one, cash received from debtors needed for the constructed. If cash account can be had from answer है A option total debtors account. Okay. Fourth one, given the opening and closing balances of debtors and the figure of credit sale, the balancing figure of total debtors account will give ऑप्शन बी है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड फिफ्थ वन इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर्स कैन बी लोकेटेड फ्रॉम टोटल डेटर्स अकाउंट ऑप्शन ए ओके। उसके बाद आंसर इन वन सेंटेंस, आपको वन सेंटेंस में आंसर लिखना है, मतलब वन लाइन आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है which statement shows the financial position in case of single entry system? Which statement, कौन सा स्टेटमेंट हमें दिखाता है financial position? तो आंसर है the statement of affairs shows the financial position of the business on a particular date in case of single entry. आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो भी चलेगा, the statement of affairs. Okay. Second question, which method is used to ascertain the profit in case of drawings and additional capital? Answer is under the net worth method, profit is ascertained by calculating the increase in net worth after adjusting for drawings and additions of capital. Okay. Next question. Second question है which account is to be prepared to find out credit sale? Answer total debtors account. Okay. Fourth one, under which method credit purchase and credit sales can be ascertained? Under the conversion method. Next question, fifth number, where does the acceptance received to be shown in case of single entry system? Answer is acceptance received during the period must be debited to bills receivable account and credited to total debtors account. Sixth one, what is single entry system? Single entry system is a term which is in many cases very loosely employed without any real regard to the exact nature of bookkeeping in questions. ओके, ये हो गया थर्ड चैप्टर का। अब लास्ट जो चैप्टर था हमारा जीएसटी के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, देन इंडिकेट करेक्ट आंसर रहे। ओके, फर्स्ट है जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, फॉल्स। सेकेंड, अंडर जीएसटी composition scheme is not applicable, false. Third one, GST registration is compulsory for e-commerce operators, true. Fourth one, the relevant form for application for revocation of cancellation of GST registration is GST REG 22, false. Fifth one, goods and services taxpayer identification number GSTIN is state-wise PAN-based 15-digit number, true. Second question है fill in the blanks.
First, Dash country is the first one to implement GST, France. Second, Dash is doing away with indirect tax such central excise duty, service tax, additional custom duty, special custom duty, as well as additional excise duty. Answer is CGST. Third, SGST is applicable when goods are sold within a state. Fourth one, composite tax is applicable for dealer with turnover up to 1 crore. Fifth one, the rate of IGST is equal to the rate of CGST plus the rate of SGST. Okay. Then third question है, indicate the correct answer. First, goods and service tax is consumption based. Second question, when a GST dealer in Kerala sells a product or zero or a GST dealer or customer in Tamil Nadu, the tax collected is second का आंसर है इंटीग्रेटेड GST. थर्ड नंबर, interstate trade is presently subject to integrated GST. Fourth one, introduction of GST affects the revenue of manufacturing states. Fifth one, the lowest tax rate under GST is 0.25%. Okay. ये हो गए हमारे सब पूरे चैप्टर के ऊपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अब हमारा फर्स्ट टर्म का तो सिलेबस पूरा ख़त्म हो गया है. हम नेक्स्ट लेक्चर से सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे. ओके. तब तक आप लोग जब एग्ज़ाम के डेट आएंगे तब बताएंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहो अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की. और असाइनमेंट अगर अभी तक नहीं दिए तो असाइनमेंट कॉलेज में सबमिट कर दो, और जिसको पॉसिबल नहीं है वो मेल करो, और मेल करने के बाद एक फ़ोन कॉल करना कि हमने मेल किया है. ओके. चलो, थैंक यू.